So we will just go through each one of the universities, like we were saying. So we'll start with NED. So Naveed Sherwani Sahab is the champion, and there are two professors, Mohammad Fahim and Hashim Raza Khan. उनमें से कोई है इस वक्त कॉल पे? अस्सलाम वालेकुम जी. Regarding the progress, on Thursday we have conducted awareness session regarding this IC design program, and there were a lot of students there, and at the moment we have 200 students in the group. So it's a hectic task to shortlist them that we are doing at the moment. सही. And No, I'm sorry, I cut you off. हमने टेंटेटिवली ये सोचा है कि हम रिस्क सॉक के ऊपर जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट शॉर्टलिस्टिंग इज स्टिल ऑन द प्रोग्रेस, सो it will take 1 week or 2 weeks to do this thing. Actually the university is closed, so it's very difficult to shortlist the student at the moment. चले सही है. So when would the student back? Sorry. Hashim here. Another thing I would like to add is कि आपको पता है कोरोना की वजह से इस वक्त जो है वो काफी ज्यादा पाबंदी है, यूनिवर्सिटी इस वक्त क्लोज है, और हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ एटलीस्ट एक फिजिकल सेशन हो जाए, हम 1-to-1 देख लें, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हमें मतलब ईमेल के जरिए एक्सेस कर रहे हैं. तो वंस यूनिवर्सिटी खुल जाए ना, तो आई थिंक फिर मोमेंटम एक गेन हो सकेगा सारी एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में भी स्टूडेंट ज्यादातर जो फिजिकल इंटरेक्शन पे ज्यादा बिलीव करते हैं. अच्छा, सही. और दूसरा ये कि इसके अंदर नवीद शेरवानी साहब ने कहा था कि ही विल टेक केयर ऑफ द एनी कॉस्ट. जी, ओके. तो नवीद शेरवानी साहब ने कहा था कि ही विल टेक केयर ऑफ द कॉस्ट फॉर द टेप आउट. So it seems like you're waiting for the students and the projects identification, but and then you will work with the eFabless directly, right? Right. Is it possible to get like some kind of a timeline from you folks, like even at a very high level, KG, when would the students be back, when you will be able to identify the students, and when you will be able to you order this tape out? Tentatively the university is going to open on 14th of June, so right after that वो जो 14 June वाला week होगा उसमें हम students को call करने का plan कर रहे हैं, and then we would be able to shortlist the project after that within a week or two. और अभी actually जो eFabless का tape out है वो end of June में है, so that would be unrealistic कि उसको हम target करें. The next one I think is in September, and the other after that is December. So हमने students को देखना है, उनको coach करना है, उन्हें ramp up करना है. तो within after 14 June जो हमारी meeting kick off meeting होगी, उसके बाद हम 1-2 हफ्ते के अंदर ये देख लेंगे कि students को कितनी मेहनत की जरूरत है, कितने काम की जरूरत है. Tentatively we are looking towards September's tape out, and if for any reason if it misses, then by the end of this year positively we must achieve that. Sahi. Chalein, sahi hai. Thank you so much. Thanks for the update. So we will when we send out the minutes, we will add a couple of those notes. From the GIK side, I see Taj is there. Okay, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी, मैं डॉक्टर हबीबुल्लाह जमाल हूँ. जी. Connecting through my phone. सही. तो हमारे यहाँ the situation है कि जी अभी तो लड़के हमारे वो गए हुए हैं कोविड पे, तो हमने कुछ लड़कों को आइडेंटिफाई कर लिया है for their final year project, and as soon as they are back, तो आते ही उनको ख्याल होगा कि मैं फाइनल ईयर एग्जाम की तैयारी कर, और उसके बाद उस दौरान में हम उनसे तय करेंगे कि क्या प्रोजेक्ट उन्हें करना है डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपेबिलिटीज. मीनवाइल हमारा जो ग्रुप है विच इज फेमिलियर विद जीकेएंस वर्किंग इन इस्लामाबाद, हमारे डॉक्टर नवीद रजाक भट्ट जो हैं, उनके दोस्त है ये जो अली रिजवी वगैरह जिसमें इस्लामाबाद में,
तो ही इज ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट देम एंड फाइंड आउट पॉसिबिलिटीज ऑफ इंटर्नशिप। तो हम समर में अपने लड़कों की इनफैक्ट किसी ऐसी जगह पे इंटर्नशिप कराना चाहते हैं जहाँ पे ये आईसी डिजाइन पे कुछ काम हो रहा हो। तो दिस इज अवर टारगेट कि समर में हम उनको इंटर्नशिप कराएं और ताकि फिर उनको हम अपने प्रोजेक्ट्स पे लेके जाएं। तो वी आर लेट इन दैट सेंस कि जी हमारे पास तो लड़कों को अभी कुछ सिखाना है, फिर उनको प्रोजेक्ट पे शुरू करवाना है। तो इस तरह की सिचुएशन बनती है हमारे यहाँ इन FES। डॉक्टर ताज अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो ही शुड बी एबल टू एलेबोरेट फर्दर ऑन कि जी उनके कंप्यूटर साइंस में क्या हो रहा है। ये मैं इंजीनियरिंग साइंस की बात कर रहा हूँ, विच इज हेड बाय डॉक्टर नवीद रजाक भट्ट जो GKN है हमारे, और डॉक्टर ताज भी GKN है, हम पुराने अलुमनाई हैं एंड दे आर इन टच विद द GKN एसोसिएशन जो है उसके बंदों से ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो ये हमारी सिचुएशन है FES में। सही। तो डॉक्टर ताज आप कोई है? हाँ जी, अपडेट? तो कंप्यूटर साइंस पे एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया इस ग्रुप को, तो हम लोग इनसे भी एक स्टेप पीछे हैं इंजीनियरिंग साइंसेज वालों से। तो स्टूडेंट जैसे उन्होंने भी बताया कि उस पर गए हुए हैं, यूनिवर्सिटियों की बंद थी तो ऑनलाइन क्लासों में घर में बैठे हैं और नेक्स्ट वीक वो आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए। तो अगेन वो एग्जाम का हल्ला गुला होगा, तो उस दौरान हम लोग कोशिश करेंगे स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट करने की, और उसके बाद फिर हम लोग स्टूडेंट से ग्रुप बना के कहने समर में जिस तरह ये लोग इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं उसी किस्म की कोई बैकग्राउंड थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हम लोग स्टूडेंट को देने की कोशिश करेंगे, और उसी दौरान फिर सॉरी प्रोजेक्ट फाइनलाइज करके उन पे काम शुरू करेंगे। तो ये जैसे अभी जिक्र हो रहा था कि ये जो टेप आउट्स हैं इनकी डेडलाइंस हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम भी अर्लीस्ट के उससे पहले आई डोंट थिंक कोई सेंस बनती है, क्योंकि हमारे सही स्टूडेंट्स सही। को थोड़ा सा बैकग्राउंड वो भी चाहिए, कहने के जो इन्होंने कोर्सेज किए ना उसमें शायद थोड़ी सी इनकी कॉम्प्लीमेंट्री कोई थोड़ी बहुत ट्रेनिंग चाहिए हो इनको इस चीज़ की। चलें, सही है। मेरी उनसे नवीद शिवानी साहब से इस बारे में इंटर्नशिप के बारे में बात हुई थी। उनका जो रिस्पांस है इस बारे में वो ये था, कल आई आस्क्ड हिम फॉर हिज कंपनी इन लाहौर कि अगर वहाँ पे कोई इंटर्नशिप वाला हो सके, एंड ही वाज बेसिकली ही इज नॉट हियर सो आई डोंट वांट टू say too much, but he was basically saying कि जो Tapeout Pakistan है, he says the purpose of Tapeout Pakistan is to get them going. It is like an internship, and probably Tapeout will count a lot on their resume. So maybe I think if you were here, maybe you guys could explain it better. Lekin I think his goal was that maybe Tapeout itself in the summer कि अगर if you have students available, maybe this Tapeout would be like an internship that they would be learning on the job. So I can touch base with Subhan bhai like tomorrow. I do know कि वो जो Tapeout GIK का एक ग्रुप बना हुआ है WhatsApp के ऊपर. I've seen some discussions with Ali Rizvi bhai, and so I know him also pretty well, Imam Bake. So I can see if they have any opportunity in internship. डेफिनेटली आई थिंक अगर वो शिवानी साहब के पास नहीं है तो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। और ये जो टेप आउट की एक्सरसाइज है ये बेसिकली हमारे लिए भी एक तरह से ना इंटर्नशिप ही कह लें, जो टीचर्स फैकल्टी हैं हमने भी इससे अभी तक नहीं जरूरत गुजरी। तो फिर मैं ख्याल स्टार्ट कर देंगे और वक्त के साथ साथ फिर ऑन द जॉब स्टूडेंट्स भी सीखेंगे, हम लोग भी चीज़ें एक्सप्लोर करके सीखेंगे, और फिर जैसे ही कोई किसी कंक्लूजन की तरफ हम लोग पहुंचने लगेंगे फिर उससे अगला जो टेप आउट आ रहा होगा उसको हम लोग फिर टारगेट करके ना उसमें फिर चलें, सही है, सही हो गया। इससे अगला है नस्ट के अंदर राशिद भाई और डॉक्टर राशिद, do you have any update? जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारी तरफ जो है काफ़ी व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो डिस्कशंस हो रही हैं, कोई एज सच नई डेवलपमेंट नहीं है। हम देखना था कि उस ग्रुप के ऊपर जो है हमें डॉक्टर हम्माद चीमा जो है अपडेट किया हुआ कि उनके पास जो है उन्होंने कोई टूल्स के लाइसेंसिंग वगैरह ली है। तो आई बिलीव दे आर ऑन ट्रैक विद ऑल दिस थिंग, and hopefully अभी फंडिंग की बात जो है वो हम करें कि जब once we will have some concrete design that we can take out, वो तो मोबाइल की जरूरत है, फोन की जरूरत
going to the rounds of fundraiser. So Baki, I see Dr. Hammad Cheema is also himself on the line, so he can just like update how things are moving, or what is their timelines at this point. Yes, Assalamualaikum, Dr. Rashid. Thank you. So the update is कि जो हमारे students हैं ना वो identify हो गए हैं, तो जो Google Doc है, if you see, so उसमें there are 9 students who have been identified, और इसमें it is a mix of students who are about to graduate जिनका कुछ ज़्यादा experience है, alongside जो कि अब available होंगे for another year to us. So we'll have this transition period between these graduating students and the let's say students who are entering the 4th year. तो ये सब स्टूडेंट्स इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी खुल रही है इन अ वीक्स टाइम, और फिर जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज में एग्जाम्स हो रहे हैं, एग्जाम्स के बाद दे विल बी अवेलेबल टू अस फुल टाइम, एंड दैट्स द प्लान कि समर में वो इधर हमारे पास अवेलेबल होंगे. तो 3rd week of June, 3rd to 4th week of June is where we see के हम एक्चुअल जो ये काम है वो स्टार्ट कर लेंगे. 3 पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स भी लिख दिए हैं गूगल शीट में, बट एज डॉक्टर भट्टी सेड के ये अंडर डिस्कशन है, और आई बिलीव नास्टियन यूएसए और डॉक्टर नवीद शेरवानी की एक मीटिंग भी पेंडिंग है, जो उन्होंने आपस में कुछ काइंड ऑफ डिस्कशन करनी थी. डॉक्टर भट्टी, उस पर है कोई अपडेट? इज इट हो गई है या होनी है अभी? जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जो है हमारी नवीद शेरवानी साहब के साथ अभी तक कोई मीटिंग, तो आई विल जस्ट लाइक कीप एन आई ऑन दैट. ठीक है. हमारी तरफ से शहरियार जो है वो जो इंटेल की जो है ना, जो इंटेल वाला ग्रुप है वो ज्यादा काफी एक्टिव है माशाल्लाह, वो करंट भी है इन चीजों के ऊपर, तो जी आई थिंक दे विल बी वेरी हेल्पफुल इन गाइडिंग अस. तो बाकी माशाल्लाह एवरीथिंग इज फाइन. बिल्कुल. तो आई थिंक वी आर ऑन ट्रैक, मगर जैसे बाकी पार्टिसिपेंट्स ने भी कहा कि जून वाला तो कैच करना मुश्किल होगा, so either we go for the September one, that we are optimistic about, and if that doesn't work, तो फिर December वाला तो इंशाल्लाह we'll make it. Thank you. चलें, सही है. नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. लेकिन डॉक्टर भट्टी, अगर आप if you want to need any help in setting up a meeting with Dr. Shirvani, but you can do it yourself. You can contact him directly, या फिर you know, Bodla Saab can help, or I can help. So just let us know if you need any help. Absolutely, Ali bhai. Absolutely, Ali bhai. We'll be able to schedule a meeting, I think, with Shiraz Bashir bhai, who is the president of Nastian. He's taking a due course of time or something, and that on that side things are going a little bit slow. My apologies on that. We will give an update, I think, when in a week time or so we will be able to schedule a meeting with Dr. Naveed Sherwani. We'll be able to go ahead with that, inshallah. चलें, सही है, बहुत शुक्रिया. Yes. अगला है कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अरशद हुसैन. जी, अस्सलाम वालेकुम अली भाई. अस्सलाम वालेकुम जी. Dr. Sahab, we already have started, and of course we get the very good response from the student. Then we also somehow kind of allocated around 8 to 10 students for the 2 different projects, and we already specify very specifically 2 different projects. Okay, and क्योंकि लोग बहुत मोटिवेटेड हैं, सो स्टूडेंट्स ने बड़ी, चूंकि मैंने आपकी जो कुछ मीटिंग्स हैं शेयर की, और सब कुछ यंगस्टर ऑलरेडी जानते हैं इन चीज़ों को, तो उसको मद्देनजर रखते हुए काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं. और हम उनमें से जैसे बताया 2 ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए हैं, प्रोजेक्ट भी आइडेंटिफाई किए हैं, और उनसे चूँकि क्लासेस अभी चल रही हैं तो उनको ये है कि जब उनकी क्लासेस नहीं होती उसमें इस टाइम पे वो काम करते हैं. तो ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी तो बंद है, लेकिन ऑनलाइन हो, अगर फिजिकली आ सकते हैं तो अगले कुछ दिनों में शायद यूनिवर्सिटी खुल जाए, जो जैसे बताया जा रहा है. और अगर ऐसा चले तो वी टारगेट आवर सेल्फ फॉर द सितंबर. आई थिंक एक छोटा सा डिजाइन, जैसे डॉक्टर नवीद शेरवानी साहब ने भी बोला था कि वी जस्ट वांटेड कि जी एक तरह से ये सिलसिला चले, एंड लेट्स गो अहेड, एंड देन वी सी आगे किस हद तक हम इसको मूव कर सकते हैं. अच्छा, ये तो स्टूडेंट एंड पे है. अभी जो इशू हमें जो फेस हो रहा है
वो फाइनेंशियल फंडिंग के मुनासबत से है कि who is going to fund the Tapeout project, even the students are ready. So this is what actually still we are looking forward, because government universities में इतनी फंडिंग ढूंढना या मिल जाना, it's not easy. So it's a but still we are looking forward with the QAU Alumni Association and some other donors who can help it out, and I think you guys can help it out. Like Dr. Naveed Sharwani said, let's have the people who wanted to do it, and then let's see how we can arrange the funding. जी absolutely. I think एक और चीज उन्होंने ये ऑफर की थी कि हम लोग we will capture it in the minutes, ताकि फिर हम लोग we can keep track of those actions. लेकिन एक जो एक्शन आइटम था लास्ट कॉल में, वो ये था कि अगर वो रेक्टर साहब से कोई कॉल करवानी, मतलब आई थिंक यू वर सेइंग कि मे बी हाँ, मैंने असल में मैं चाह रहा था कि मैंने डीसी साहब से बात की थी, आज ही सुबह बात हुई है कि मैं उनको इस ग्रुप में ले लूं, तो लेकिन वो मसला ये है कि वो अवॉइड कर रहे थे, तो मैंने कहा पहले एक तो मैं उनसे खुद ब्रीफ करके एक दफा मिलना चाहूंगा, फिर और उसके बाद नवीद शर्वानी साहब की उनसे एक मीटिंग करवाता हूँ ऑनलाइन, ताकि उनको सारी चीज एक्सप्लेन करें. But I think that even though they have a meeting, it's really difficult. But still, we can try. I think we can try. जी. और वही वाली बात है कि maybe we, you know, I'm pretty sure we'll be able to find some way to finance or fund. Yeah, if not two Tapeout, maybe one Tapeout, like something like that. Yes, I'm sure we will be able to find that. Inshallah. इंशाल्लाह ताला. इसमें अली भाई एक और बताना था, एक दूसरे कोलीग हमारे डॉक्टर जीशान अकबर, तो उनका प्रोजेक्ट भी बेसिकली मैं लीड कर रहा हूँ इन द सेंस, उनको एक क्योंकि दो एज अ रिक्वायरमेंट है 2 टीचर्स की, सो वी हैव अ 2 बेसिकली मेंबर्ड एज अ टीचर प्रोफेसर, एंड वी हैव 8 स्टूडेंट्स, सो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, final year undergraduate students, so they have to submit their thesis in the late August, but still they have a reasonable time, because after the submission of their thesis, they have to look for the job. At the same time, we will offer them, they should come up and work here for their Tapeout project. लेकिन वो आप कैसे करेंगे आफ्टर ग्रेजुएटिंग, तो अगर वो अगस्त में ग्रेजुएट कर जाते हैं? अगस्त में बेसिकली यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक खासा गैप होता है, ग्रेजुएट तो हो रहे होते हैं लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज तो इतनी नहीं है, तो वो एक इंटर्नशिप उनको करनी पड़ती है बहुत सारी केसेस में. तो एक तो है कि आप पढ़ रहे हैं साथ साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं, दूसरा ये वंस यू फिनिश एंड यू वांटेड टू गो अहेड फॉर सम काइंड ऑफ इंटर्नशिप, तो विल जस्ट लुक फॉरवर्ड कि दिस कुड बी एन इंटर्नशिप बट एट द सेम टाइम अ वर्क. सो वन बट इसमें लगता है कि अगला टेप आउट वाला जो मतलब जिसमें लोग बात कर रहे हैं वो होगा लाइक सितंबर में, टू गेट इन द क्यू. सो इफ यू गेट इट इन सितंबर एंड देन दे नीड टू वर्क, तो you feel like at least there would be students interested. तो yes या चलें, सही है जी, बहुत शुक्रिया. तो अगला स्टेप वो आ रहा आपके लिए डॉक्टर अरशद, मतलब you want to reach out to Naveed, साहब डायरेक्टली? Okay. बिल्कुल. तो हमारे ग्रुप में प्लीज उनसे, he's very accessible, so you can just, any one of you guys should be able to reach him. Okay, thank you. चलें जी, बहुत शुक्रिया. अगला है UIT उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जीशान रफीक. जीशान रफीक या डॉक्टर अली में से कोई है? अच्छा, फिर फास्ट से डॉक्टर राशिद रमजान या डॉक्टर अली अहमद. केस से कोई है? UET टेक्सला से? Yes, this is Naveed. Assalamu alaikum, Ali bhai. जी अस्सलाम वालेकुम. We have registered for the Open FPGA and eFabless websites and have meeting with our university champion Imran Latif bhai, and currently we are identifying the students and talk about the projects. Inshallah, in the next week we will finalize something. एक सजेशन ये है कि हमें कोई ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं eFabless और ओपन FPGA के ऊपर. अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं कि ये एक एक्शन आइटम
I don't know, right? I think we can like tomorrow like talk again to make sure we have all the comments like written, but maybe we can take that as an action item, right? To help set up the training, I think is what Dr. Naveed bhai is saying. हाँ जी जी ई फैबलेस और ओपन एफपीजीए पे अगर हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें क्योंकि प्रोफेसर्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं सारी यूनिवर्सिटीज में तो वो अपने स्टूडेंट्स को फिर अच्छा गाइड कर सकते हैं चलें सही है तो we'll speak with Naveed sir and see how we can set up those trainings as well for all the universities and what kind of programs we can offer. इसके अलावा जी जी sorry Dr. Azhar from UAT Texla जी 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 असल में क्योंकि जिस तरह डॉक्टर नवीद कह रहे थे अभी तक जो प्रोजेक्ट्स हैं हम लोगों ने एफपीजीए के ऊपर किए हैं ज़्यादातर तो जो एसिक डिज़ाइन का फ्लो है उसमें एक तो ये कि हम सही बात है आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स और स्टूडेंट्स लेकिन उसके अलावा चूँकि हमें ख़ुद भी उस फ्लो से गुजरना पड़ेगा और राइट नाउ इट इज़ नॉट क्लियर कि जो ई फैबलेस के ऊपर टूल्स हैं चूँकि वो आई डोंट थिंक दे आर ओपन सोर्स और फ्री तो वो टूल्स हमें अवेलेबल होंगे या कोई फंडिंग करेगा उसके बाद हम उन टूल्स पे काम कर सकते हैं और फिर उनकी ट्रेनिंग के बारे में जिस तरह डॉक्टर नवीद ने कहा कि वो आई थिंक इट वुड बी बेटर कि अगर कोई ट्रेनिंग हो जाए ताकि along with the projects we will also be trained on the flow or tools of the ASIC design. सही तो मे बी हम I think so कि जो ई फैबलेस में जो टूल यूज हो रहा है दैट इज मैजिक एंड दैट इज एन ओपन सोर्स टूल एंड इट्स फ्री और अगर डिजिटल डिजाइन में जा रहे हैं तो ओपन मेन यूज करें दैट इज आल्सो अ फ्री टूल बट देयर इज अ ट्रेनिंग नीडेड रिगार्डिंग दीस टूल्स मैजिक तो बहुत टफ टूल है आई डोंट थिंक कि यार मैजिक के अंदर कोई डिसेंट चिप बनाई जा सकती है I don't know, like maybe it might have improved over that time, but if I remember it correctly, Magic was not very conducive tool for the layout. सही तो आई थिंक चलें ठीक है ये कि अगर कोई और है साहब कॉल के ऊपर who might have any more input about the training if you guys have any experience about the trainings and materials that you guys might have used because it seems कि यहाँ पे कुछ group हैं who have a lot more experience than others maybe you can just share it on the group about the training ताकि other people can benefit from it. सही है तो आगे चलते हैं यूटी लाहौर से कोई है यहाँ पे I think the last time the action item was Naveed Sherwani sir was going to speak with some contacts he had और उन्होंने recommend करना था तो because he's not here I don't have the names. The last one was is Lums, Dr. Awais bin Latif. Yeah, anyone from Lums? I did speak with a couple of contacts within Lums and they were saying that they already are, and some of people here might have some more background or information, but somebody mentioned that the contacts I have, उनका नाम है Dr. Safiullah and Dr. Momin Uppal, and they were basically sharing that Lums already they already do like a lot of tape outs. They already have some expertise in that area. So I'll try to reach back to Dr. Awais, but I don't know, maybe that is the reason why, they're not as enthusiastic in this group. So if they are not, we don't have to have like 10 university, right? So if somebody is already more advanced and they feel like they can do it on their own, it's okay. Like we are just trying to increase more IC design expertise in Pakistan, right? So we want to focus on universities who actually want to be part of it. Like Qadim University, where I think we should back those up, and like others too. So I think did I miss anyone
on this call who didn't get the opportunity to speak? Did everyone get the opportunity to speak? Anything, Rashed Bhai, Dr. Bhatti, do you want to add any last parting comments? I suggest that we should look into the possible training tracks, because I know that for eFabless you have to follow a certain tool chain to actually get the chip to their standards, and especially when the technology that they use. We need to just like get some orientation of the technology, what all are their design rules, to get the GDS, get your design all the way to GDS2. So I believe that any university which is already on using the eFabless toolchain or the stack, I think they can take a lead and then just help us with the training. Otherwise, we can see that if there are some online resources that are available, then we just can find out some volunteers from different universities to actually start like producing some sort of a tutorial sessions, and get everybody who is like doing something in this whole tape-out effort come on board, and then just like to follow one track of eFabless if you're going with that one. Sure. Okay, I think that's a great idea. So we'll send out the minutes with with that as one of the key action item, and between now till like next week, I think we should have at least those training identified. लगता ही है कि अभी भी कोई 1-2 हफ्ते हैं बाकी, because the students are out and then they have exams and stuff like that. So it seems like at least in the next week or two, I think there's not much that could happen. And it seems like the earliest we can get in the queue is maybe like September timeframe. So we might have some time there, for fundraising and stuff like that. दूसरा जो है अली, एक और क्या पॉइंट है, मतलब this is just my suggestion, maybe if other people feel differently, I believe के जो चिप डिजाइनिंग का लाइफ साइकिल है उसमें हमें वीकली केडेंस की जरूरत नहीं है. We probably can just like meet less often and just like share the progress. So that's my just suggestion. Absolutely. So it is becoming a little bit difficult. I think इस वक्त I think once we I think there are still some universities like we are seeing within like GIK and within some of the other universities. I think with the fundraising and stuff, I think there's still like a lot of actions open. I think once we close some of them and the actual work starts, I'm actually hoping we might not even have to meet, right? Other than maybe once every like 4 or 6 weeks or something, just for sharing the progress made with each other, maybe, right? If people thought that is useful. ये तो अभी सिर्फ शुरू की बात है. मतलब if you guys think right now we don't need a meeting next week and we can do it in 2 weeks time, it's okay. But for us to get into the September queue, other than NAD, I don't see anyone has funding yet, right? So I think there's a lot of actions that need to take place. So that's why we were meeting every week. But so maybe let's see. I think this time Dr. Naveed is not here. So maybe if we can just, if from NAS side, I think one of the action item was, and we will send it out, and from the Qaid-e-Azam University to reach out to Naveed Shirwani sahab about funding, and then we will circle back with the trainings program like next time, and then we can decide if we need to have less meetings for sure. I agree. We don't need to have meetings just for the sake of it. Any other last question, comments? Raheel Bodla sahab, anything from your side? I think he's probably out. So any question, comments from anyone? We will just do one more based on when Naveed Shirwani sahab is available next time, and just look at the funding status and where we are at next week, and then we can decide on the meeting sequence too. ठीक है, चलें जी, stay safe and we'll speak again. Thank you so much जी, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you Ali. Thanks. Allah Thank you जी. Allah Hafiz. Allah Hafiz.